Friends, the voting power for International Monetary Fund, that is IMF, is typically based on the special drawing rights, SDR. Then in today's session we talk about what are the measures for SDR, how it is got calculated, and what is the rank in terms of India. So these are the important things we are calculating or we are determining for in today's session is dedicated for what is the measures for special drawing rights, how it is got calculated, and what is the current rank of India. इसमें हम सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखेंगे कि why the SDR actually came into effect and what are the major implications for the special drawing rights. Okay, so be with me to know all the concerns for the same. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट IMF implications ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड द सेकंड वन इज द IMF quota. These are the most important perspective. So the major content for today's session is what do you mean by the term IMF quota, what is the IMF quota, followed by that the exact formula by which IMF formulate the quota, then special drawing rights, the special implications for SDR, and finally some of the perspectives for the same. Okay, now we start with our today's session related to the IMF quota. यहाँ पे ध्यान में रखिए, when we say IMF quota, so during that time it actually started when company joins. Okay, so what happened here, when any country joins IMF, it assigns a particular quota. Okay, the quota is assigned on the basis of the economic, or we could say on the basis of certain economics of the country, or we could say the economic positions of the country. ठीक है, so economic position के हिसाब से उनको कोटा दिया जाता है. Now what happened, the typical IMF quota formula is derived by means of 4 important parameters. Okay, यहाँ पे कितने parameters रहेंगे? The 4 parameters are there for the IMF quota. We will definitely see in the हम next slide में देखेंगे. So the quota is denominated in SDR. That means special drawing rights. So here we could say SDR is IMF's unit of account. So rather than money, SDR को हम कह सकते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट एक्ट एज अकाउंट ऑफ IMF लाइक दिस वे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको उतना वीटो पावर मिलेगा, आपको उतना परसेंटेज शेयर होल्डिंग मिलेगा लाइक दिस वे. लार्जेस्ट मेंबर, करंटली द लार्जेस्ट मेंबर इन कंसर्न टू द आवर SDR इज नथिंग बट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट मेंबर है. एंड फॉलोड बाय दैट वन अगेन द स्मॉलेस्ट मेंबर. सो द स्मॉलेस्ट मेंबर इज तुवालू, TUVALU, is one of the very smallest member of IMF. General Review Committee to change in any type of SDR allocation that could be a funda of GRV, or we could say GRQ, General Review Committee. Okay, अब हम बात करेंगे how the quota formula is there. जैसे हमने बताया था there are 4 parameters for the quota formula. Before that keep in mind a quota formula is used to help and assess members and relative position in the world economy. It means इसका मतलब क्या होता है, it is important to assess the economic power of the world. जो कुछ मेंबर रहेंगे तो हर एक को उसके economic power with concern to the world's competitiveness उसको उतना कोटा दिया जाता है. ठीक है, so definitely the quota is a type of guiding the distribution for the quota. इस हिसाब से हम गाइड कर सकते हैं. अगेन जितना हमारे 4 पैरामीटर्स है उसके हिसाब से हमें उसका कोटा फार्मूला निकालना पड़ता है. सो द फर्स्ट इज द GDP. यहाँ पे देखिए GDP को 0.50 इसका वेटेज है. सो डेफिनेटली द वेटेज इज गिवन टू 50%. Then followed by that openness. Openness means how economy is open, how economy is liberal to the different world. So for that 0.3 is the weightage and 30% is the typical percentage. Then variability. It is nothing but the economic power. We could say economic adaptability according to the different situations. And finally reserves. The reserves are nothing but the foreign exchange. Okay, so ये हो गए आपके foreign exchange reserves. So from this concern for the foreign exchange reserves there are 5% limit. So देखिए GDP को 50% contribution, openness to the economy 30%, variability 15%, and reserves foreign exchange 5%. So according to that, so that is the whole contribution of 100%. ठीक है, ये कितना हो गया पूरा 100%. पर इसी के हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ते, ये हम यहाँ पे लेंगे. ओके, और यहाँ पे हमारा आ गया कॉम्प्रेशन फैक्टर. इसको वापस हम स्केल अप करेंगे बाय 9.95% ऑफ द कॉम्प्रेशन फैक्टर एंड देन वी फाइनली मेक अ कोटा. ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द कोटा. एग्जैक्टली ये कोटा है क्या फॉर द IMF. ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात,
कोटा इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ शेयर गिवन टू द मेंबर्स। ठीक है, मतलब हर एक मेंबर को कुछ ना कुछ कोटा दिया जाता है फ्रॉम द आईएमएफ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इट इज टिपिकली टू द ओनली टू द मेंबर कंट्रीज, खाली जो मेंबर है उनको ही दिया जाता है। देन सेकंड थिंग, अब देखते हैं, हमने जैसे बताया कि कोटा इज गिवन टू द मेंबर कंट्रीज, बट हाउ इट इज गिवन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिक्विजिट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या कंडीशन है कि डिपेंड्स अपॉन द फंड। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल every member has to put certain amount of money or have to park certain amount of money to the IMF। हर एक को IMF को कुछ फंड देना पड़ेगा। so according to their fund availability, according to their fund allocation आपको कोटा दिया जाता है। ठीक है, so the year which is reformation of quota known as the 2010 is the reformation year। fine, then according to the IMF quota the voting power is also given to the every member country। हर एक मेंबर कंट्री को उसी के हिसाब से आपको वोटिंग पावर दी जाती है। फाइन, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट द एसडीआर। जी हाँ, यहाँ पे कितनी 5 इंपॉर्टेंस दी गई है फॉर द एसडीआर, स्पेशल राइट्स के 5 दी गए। ठीक है, सो फर्स्ट देखिए कब से स्टार्ट हुआ था। एसडीआर स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1969। ठीक है, अब देखिए आईएमएफ 1945 में भी स्टार्ट हो गया था, बट फॉर द एसडीआर एप्लीकेशंस इट इज स्टार्टेड इन 1969। देन एक्सेस, ओनली द एक्सेस ऑफ एसडीआर अलोकेटेड थ्रू द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो मेंबर्स है उसी को। और आज के कंडीशन में देयर आर ओनली 5 करेंसीज हु एडवोकेटेड द एसडीआर वैल्यू। 5 करेंसी को दिया गया है। कौन कौन से है? यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड चाइना। चाइना को भी ये मिला है फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। 2016 में चाइना को ये मिल गया था। फाइन, थर्ड वन, ओनरशिप। डेफिनेटली यू कांट एक्चुअली ओन एसडीआर एज अ करेंसी। आप करेंसी के हिसाब से उसको नहीं ले सकते। यू टेक इट एज अ अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट इज इंपॉर्टेंट वन। Then membership, definitely we could say from the 2016 को there is a gross we could say a reformation for the membership parameter। देखिए reformation कब start हुआ था? From the 2010 to 2016, so that is nothing but the 13th review committee जो थी हमारी कोटा के लिए, so उस हिसाब से reformation start हुआ था। So from this way China's Remibini will be officially part of the exclusive SDR club from 2016 itself। 2016 को उनको उतना कोटा मिल गया था। So they are the non-executive members। And finally management, definitely IMF uses SDR special drawing rights as a international reserve asset। अब वो इंटरनेशनल रिजर्व असेट बन गया है। These are the important 5 things for the SDR। अपार्ट फ्रॉम दैट कीप इन माइंड हम कितना बोरो कर सकते हैं। हमें पता है हमें कुछ देना पड़ेगा आईएमएफ को, कुछ हमारे रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, मे बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीशियस कमोडिटी। उसके बदले में वी गॉट द लोन्स, वी गॉट द एडवांसेस, बट हाउ मच? सो द कंट्रीज आर अलाउडेड टू बोरो 145% ऑफ देयर कोटा। उनके कोटा के हिसाब से 145% वो बोरो कर सकते हैं एनुअली। These are annually और क्यूमुलेटिव, और कुल मिला के पूरे अब तक कितना कर सकते हो? 435%। ठीक है, now we move toward International Monetary Fund, some of the basic of the IMF as it is established on 27 December 1945, headquarter Washington DC, is it US, United States of America। Currently 190 members are there and Andorra is the 119th member। ठीक है, 2020-21 में ही एंडोरा ऐड हुआ है 119th मेंबर। करंटली एमडी इज मिस्टर क्रिस्टिलियाना जॉर्जियो। ठीक है, ये चीज भी एक अच्छे से ध्यान में रखिए। हाउ टू अप्लाई फॉर द न्यू मेंबर्स। ठीक है, आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा एज अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, देन आपका एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड होगा फॉर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, देन एप्लीकेशन गॉट एग्जामिन्ड, different types of scrutiny forwarded for your application, then IMF Board of Governors। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है IMF में, दैट इज द कमिटी ऑफ IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज द प्राइम इंपॉर्टेंट वन। एंड फाइनली इफ योर प्रपोजल इज सुटेबल टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, देन डेफिनेटली यू गॉट द फाइनल क्लियरेंस। अब हम बात करेंगे quota implications। So keep in mind what are the different roles of quota। So first important role is the resource allocation। We could say different types of resources are allocated by means of your quota। So quota determine the maximum amount of financial resources a member country could provided to by the IMF। ये भी हमें पता चलेगा by means of the quota।
Then voting power, that is the most important. So quota is one of the key point by which your voting power is decided. ठीक है, इस हिसाब से आपको डिसीजन लेने में इसके हिसाब से मदद मिलेगी. सो वोटा कंप्राइजेस 1 वोट पर 1 लाख ऑफ SDR प्लस बेसिक वोट्स. सो इट इज सेम फॉर ऑल मेंबर्स. सो यहाँ पे ध्यान में रखिए, जनरली टू एक्चुअली इंप्लीमेंट एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट, एनी टाइप ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ कोटा, ध्यान में रखिए कोटा की जो कमेटी है, यहाँ पे भी आगे भी मैं तो बताऊंगा, पर यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि कोटा की जो कमेटी है इट कुड बी एक्चुअली मीटिंग फॉर एवरी 5 years, कोटा रिव्यू करने के लिए, कोटा रिफॉर्म करने के लिए. तो वो करने के लिए यू हैव टू गॉट एटलीस्ट 85% ऑफ द वोट्स. आपको अगर 85% वोट मिलेंगे तो ही आपका कोटा बढ़ सकता है. लाइक दिस वे. ओके, एक्सेस टू फाइनेंस, nothing but one of the way by which IMF provide you the loan, IMF provide you the finance. And finally SDR allocation, that is the most important. So quotas determine members share in general allocation to the our SDR, special drawing rights. Fine. अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, when we say India, so India खाली खुद को ही रिप्रेजेंटेट नहीं करता, इंडिया यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है more 3 countries. So India is there to represent more 3 countries and these are बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान. सो इन चारों को मिला के इंडिया रिप्रेजेंट करता है. एंड करंटली इंडिया इज रिप्रेजेंटेड इज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. नाउ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ SDR. ठीक है, जैसा हमें पता है IMF इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिजर्व असेट एंड दीज आर नथिंग बट द SDR एंड दैट एक्ट एज अ सप्लीमेंट द ऑफिशियल रिजर्व्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर कंट्रीज. ये कब स्टार्ट हुआ था? फ्रॉम द ईयर 1969. अब ध्यान में रखिए, करंटली जैसे हमने बताया 5 इंपॉर्टेंट करेंसीज आर देयर, USD, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, येन जापान एंड युआन फ्रॉम द चाइना इटसेल्फ. IMF इज अ कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशंस. जितना आपको कोटा है उस हिसाब से यू कुड मेक योर वोटिंग पावर, यू कुड मेक योर शेयर होल्डिंग कैपेसिटी लाइक दिस वे. सो कोटाज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IMF फॉर द जनरल गवर्नेंस पर्पज. इंडियाज करंट कोटा, अब बात आती है इंडिया पे, इन IMF इज SDR 5821.5 million and this is 13th largest, 13वां लार्जेस्ट है कोटा होल्डिंग कंट्री एंड गिविंग इट्स शेयर होल्डिंग टू 2.44% इज द शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग पावर इज 2.63% इज इंडियाज वोटिंग पावर. ओके, एंड वीटो पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कितनी है? 16.52%. तो इसका मतलब क्या है? इफ आपके साथ आपको कुछ करना है तो डेफिनेटली यू रिक्वायर सपोर्ट ऑफ यूएस, क्योंकि 16 से 17% यूएस का कंट्रीब्यूशन है इन द वीटो पावर, और आपको रिफॉर्मेशन लाने के लिए कितने लगेंगे? 85%. सो विदाउट यूएस सपोर्ट दैट कुड नॉट बी पॉसिबल. दैट इज द रीजन यूएस हैव दैट मच इकोनॉमिक पावर. ठीक है, IMF मेक्स न्यू एलोकेशन ऑफ SDR USD 650 बिलियन टू फाइट अगेंस्ट COVID-19. फाइन. अब हम बात करेंगे सर्टन माइलस्टोन्स एंड हाउ कोटा गॉट चेंज्ड. सबसे पहले ध्यान में रखिए, द पावर बाय दैट कोटा कुड रिव्यू इज टुवर्ड्स द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उनके पास पावर रहती है, सो दैट दे कुड मीट आफ्टर एवरी 5 years एंड द कमिटी इज नथिंग बट द कोटा रिव्यू कमिटी. फाइन. नाउ वी टॉक अबाउट वोटिंग पावर. जैसा हमने बताया, you require at least 85% veto power or 85% votes so that reformation could be done. उसी के हिसाब से आपका कोटा चेंज हो सकता है. देन कंसेंट रिक्वायर, अगर आपको कुछ कंसेंट चाहिए तो उस हिसाब से अगर आपके पास 85% रहेगा तो ही आपको कंसेंट मिल सकता है लाइक दिस वे. देन व्हाट हैपन इन द 14th रिव्यू कमिटी. अब ये बहुत बड़ी बात है. 14th रिव्यू कमिटी स्टार्टेड इन द ईयर 2010. ठीक है, सो 2010 से 16 तक थी. तो यहाँ पे क्या हुआ था? शिफ्ट ऑफ कोटा टू द 6%. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था? ड्यूरिंग दैट टेन्योर चाइना गॉट इज देयर इमरजेंसी. यहाँ पे चाइना को उनका इमरजेंसी मिल गया था और चाइना को टिपिकली 6% यहाँ पे मिल गया था. इंडिया भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा बढ़ोतरी हुई थी, लाइक 2.1 से 2.6 तक इंडिया भी यहाँ पे गया था. सो डेफिनेटली इन द 14th रिव्यू कमिटी ये बहुत ज़्यादा साल चली लाइक दिस वे. नाउ व्हाट हैपन आफ्टर 15th review committee commenced on 7th February 2020 by the Board of Governors, but during that committee the agreement made that no any increase in the quota for members. यहाँ पे किसी का कोटा बढ़ाया नहीं गया था in 15th General Review Quota GRQ. अब ध्यान में रखिए, when we say 15th, अब 16th कोटा रिव्यू कमिटी ये भी आ गई है. सो इसके अंतर्गत क्या हुआ है
and according to that 2023 is the year by which quota review committee could meet and they could decide what could be the changes, if any types of reformation in the quota, like this way. Okay, so these are my details. If you would need anything, you could catch me on the same. Okay friends, I think the session is definitely useful to you. Here we just take a look about the what is SDR, what are the measures, and most importantly how it is got calculated, because according to SDR it got implicated on your veto power, on your percentage of holding for the IMF. Okay, so definitely session is useful to you. If still you have any query, you could write me in the comment section. I will definitely help you out for the same, and stay tuned for the next session. Till then, thank you.